Good evening students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the remaining part of the MCQ discussion of the Indian Contract Act. ठीक अछि Indian Contract Act रो हम fill in the blanks देखिथिलो, MCQ रो किछि portion देखिथिलो, एबे हम देखिया remaining part. ठीक अछि तो the first question is voidable contract is one which is dash. Voidable contract is one which is dash. Respond करि परिबो which is dash. Please respond. 3 seconds भितर respond करियर अछि हैला प्रेम टेक्स्ट बुक टिके देला गोथरे voidable contract रो मीनिंग कोन कहिथिली मो voidable contract रो मीनिंग कोन कहिथिली ना the meaning is the contract which can be made void at the option of one or more parties ठीक अछि one or more parties द्वारा कोन से contract ता void हेई पारिबो ठीक अछि void हेई पारिबो तो this is lawful or unlawful कोन से पचारछि सेटा हमको दरकार valid अछि which is valid so long that it is not avoided by the party entitled to do so. तो मु voidable contract रो meaning कहली voidable contract रो हाँ meaning टी कहली कि सेटा कोन which is valid so long it is not avoided by the party entitled to do so. अच्छा screen कोन पे अधा आछी screen अधा कोन पे आछी Is it clear now? Screen ठीक आछी दुश्चिना नहीं रेस्पॉन्ड करो पचारछि देखा ठीक अच्छे छाड़ दुसिया तांको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हो ठीक अच्छे जदि दुसुनी तो शुणिकी ये करिवो हैला पर लेक्चर रे फॉलो अप करियो हाँ सेठा था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड प्रपोजल इज डैश टेक्स्ट बुक रे देखिए रेस्पॉन्ड करो डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड प्रपोजल डायरेक्ट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल रो डिफरेंस कोन से पचाछ सेल रो डायरेक्ट प्रपोजल रो एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल रो डिफरेंस कोन व्हाट्स द डिफरेंस फर्स्ट थिंग होची एडी होची ये डायरेक्ट ऑफर करूची बट एडी कोन करची से एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल करची तो दिस इज व्हाट माने से कहूँ कौन ये डायरेक्ट ऑफर ये कौन हो इनविटेशन टू ऑफर सो द मेजर डिफरेंस इज दिस इज इनविटेशन टू ऑफर इनविटेशन टू ऑफर आ एडा हो कौन आमर डायरेक्ट ऑफर बुझला सो दैट अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस एज सून एज द पार्टी टू होम इट मेड एक्सेप्ट्स इट बट एन एडवर्टाइजमेंट डज नॉट एडवर्टाइजमेंट केबेले सेमती हे पारियोनी तापरे कहूँ से इन बुक डिपोट अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एनलिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल इज डैश से कहूँ कौन गोटे बुक डिपोट रे कैटलॉग ऑफ बुक्स लिखाई तांकर प्राइस एनलिस्ट कराई आ प्लेस भी स्पेसिफाई कराई कि जोड़ी से बुकटा मिलेबो तो एटा कौन आली से पचारछि दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप खाली जदि प्राइस था तो सेटा कौन होता इनविटेशन टू ऑफर होता बट जेहेतु आमर कौन अच्छी ये इनविटेशन टू प्राइस एज वेल एज प्लेस जीटा जगह अच्छी दैट्स व्हाई एटा होची कौन आमर इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप ठीक अच्छी तापरे अ कैटलॉग ऑफ द गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर सेल अ सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इनविटेशन ऑफ ऑफर तो से कौन कहूँ अ कैटलॉग ऑफ गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर सेल is dash a series of offers but only an invitation for offer जदि but लिखा है तो ये गोटे नेगेटिव जिनस आगे आसो तो आंसर वुड बी इज नॉट तो कैटलॉग ऑफ गुड्स माने कौन मेन्यू कार्ड अड़ेबा बुझला ना गुड्स रो जहाँ भी आम इंडिविजुअल जिनस गुड़ाक अच्छी से जिनस गुड्स गुड़ाक तापरे इज
not a series of offers गुड़ा को directly series of offers नहीं सेड़ा but कौन से जागो खाली invitation to offer. Then देखो an offer does not lapse if the dash, an offer does not lapse if the, very good, the answer is acceptance is made by the offeree in ignorance of the death of the offer. Acceptance is made by the offeree in ignorance of the death of the offerer. तो से कौन कहूची ऑफर टा केबे लैप्स हबनी केबे कैंसिल हबनी ना जब एक्सेप्टेंस टा ही जेची इज मेड बाय द ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर. माने ऑफरी जे अच्छी सी एक्सेप्टेंस टा केबे जणैला ना सेतळ जणैला जेतळ को ऑफरर रो ऑलरेडी डेथ ही जेची बट ये जानेनी बुझिला ना. तो सेतळ को से जहां भी एक्सेप्टेंस किबा ऑफर अछि सेटा केबे हले लैप्स हबन. क्लियर. A telephonic acceptance is complete when the offer is dash. Offer understood by the offerer. Very good. Heard and understood by the offerer. Chanchal, very good. Heard and understood by the offerer. Telephonic acceptance is complete. Telephonic acceptance माने कौन? The acceptance which is noted down in by way of telephone. फोन रे जतलो तो एक्सेप्ट करूछु तो केबे सेडा एक्सेप्टेंस टा कंप्लीट होउची ना जतलो को रिसीवर जे भी अछि से जिनसडा सुनिबो सुनिगी ऑफरर बुझी जिवो. बुझिला. देन नेक्स्ट से कौन गोची विथ रिगार्ड टू द कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट. कोडा ठीक अच्छे से पचारछ कोडा ठीक अच्छे देखो. अनसाउंड माइंड माने के पागल तो कोडा ठीक अच्छे से कोची अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नाही काहेंगे से कॉन्ट्रैक्ट भीतर एंटर हेई पारे जतळ तार साउंड माइंड थाउची. अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एडा भी ठीक नहीं से अनसाउंड माइंड थिला लो केबेले एंटर हेई पारियनी जेबे से स्टेबल हबो सेतळ एंटर हेई पारियो. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन कॉन्ट्रैक्ट when he is at the time of entering into a contract of sound mind. एडा होची right answer. बुझिला. Clear. Then while obtaining the consent of the promisee, keeping silence by the promiser when he has a duty to speak about the material facts amounts to consent obtained by dash. Obtained by, very good, the answer is fraud. तो से कौन कहूची ना साइलेंस बाय द प्रॉमिसर व्हेन ही हैज ड्यूटी टू स्पीक जेतळे से कथा बडा निहाती दरकार सेतळे जदी से साइलेंट रही जाउची तो से जिंस को कौन कहया हमें फ्रॉड कहिबा. बुझिला. साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड. साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड. Then देखो A threatened to commit suicide if his wife did not execute a sales deed in favor of his brother. The wife executed the sale deed. The transaction is dash. Voidable due to coercion. Voidable due to coercion. Chanchal, very good. Voidable due to coercion. तो से कौन कहूची coercion माने कौन जोर जबरदस्ती करिवार किंबा threaten करिवार. तो हमर को वर्ड टा पढ़ा स्लेडी by force. Whenever we are obtaining the free consent by force, this is coercion. हला. A contract which is violated by undue influence. Undue influence रे जदी violated ही जाउची is declared is voidable. Very good. Is voidable. तो से कौन कहूची undue influence द्वारा जदी सेडा कौन होची declare करि दोचने violated माने almost cancelled तो सेडा कौन हबरो voidable. माने कौन कहूची undue influence टा जेते जे जानि पारलोनो कि से जोर जबरदस्ती करिगी किंबा influence यूज करिगी कंसेंट टा इफेक्ट करची कहिगी सेते जे सेडा वैलिड रहबो. वंस जदी से पार्टीज जानि देले कि ए पर्टिकुलर जिंसडा once the party who do threaten and do the contract, the another party should have to give the complaint against the him. So it is comes under the voidable act. Absolutely. Voidable contract is whenever the parties to the contract, one of the parties to the contract have the option of making the contract void. से जिनसडा को तांके चाहिले कैंसिल करि परिबे. केबे कैंसिल करिए ना जेतळ को जाना पडियो कि ए जिनसडा कोन जोर जबरदस्ती रे आनी चंदी कहिकी. Clear? Then consider the following.
consider the following. And the active concealment of fact and promise made. Active concealment of the fact and very good promise made without intention of performing it. तो basic जिनस जागो सेटा. Factors violating consent are dash. Factors violating consent are dash. All course and undue influence. सब जागो violating माने कौन? Affecting. Factors affecting consent are dash. Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Misrepresentation means dash. Same. Answer is all of the above. Unwarranted assertion, breach of duty, innocent mistake. Then देखो, if a party stands in a fiduciary relationship, fiduciary माने कौन? Monetary relationship. Fiduciary माने कौन? Monetary relationship. He can dominate the will of other. Very good. He can dominate the will of another. जदि सेमान भितर मॉनिटरी रिलेशनशिप अच्छी ये ता पाखरे उधार नहीं आउ तांको कोन रिटर्न करनी तो से केस रे कोन हबो से पर्टिकुलर पर्सन ताको धमके पारिबो बुझिला हां डोमिनेट करि पारिबो the particular person can may arrest him. तापरे a person is deemed to be in a position to dominate the will of the another if he is dash. If he is हाँ both real and apparent तापरे कौन stands in a fiduciary relationship. If both the parties to a contract believe in the existence of a subject which in fact does not exist, the agreement would be void. कौन पे void ना जेहेतु existence of the subject आगा नहीं subject टा existent आगा नहीं और से जिनसला से माने जानो न जानो से contract टा कौन आगु को जाई पारिबोनी. Clear? Then for a valid contract dash. For a valid contract Parties should have given their consent and the consent should be free. दिजन जार कंसेंट दरकार और कंसेंट कौन फ्री कंसेंट होइथिबा दरकार माने कौन मिस्टेक मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस कोडा द्वारा इफेक्ट हेई नथिबो. When both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to an agreement, the agreement is what? Very good, the agreement is void. बुझिला. In Indian Contract Act, the term consensus ad idem means dash. Consensus ad idem means dash. parties agreeing upon the same thing. Same thing in the same sense. Mark it important. Consensus ad idem माने कौन? Agreeing upon the same thing in the same sense. Agreeing upon the same thing in the same sense. To prove undue influence, the plaintiff has to prove dash. Undue influence माने कौन? Undue influence माने कौन? से गुटे जने आउ जनगर गुटे अधिक पोजीशन रे थिबो आ से आराम से ताको कौन इन्फ्लुएंस कर दो थिबो तो से कौन कोच देखो in a position to dominate the will of the plaintiff आउडे कौन obtain an unfair advantage from the plaintiff. बुझला. तापरे the validity of a contract is not affected by dash. The validity of a contract is not affected by, yes, the right answer is mistake of Indian law. Mistake of Indian law. Unlawful agreements comprise dash. Unlawful agreements comprise all the agreements mentioned above. Illegal, immoral or कौन opposed to public policy. तीनटा जा जिनसो cover up ही जोच. The exceptions to the rule that an agreement is in restraint of trade is void are contained in dash. को section number अच्छी तो irrelevant जिनसोडा हमरो question पच्चरी बने इंदी तो answer is section number 27. Section number 27. A contract to trade with an enemy is dash. It's an important point. Exam रे लेखिबो but chance बहुत कम अछि
सेक्शन नंबर पचार चांस बहुत कम अच्छे. द आंसर इज एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. माने गोटे एनिमी कंट्री किंबा एनिमी सहित जदि ट्रेड करुच्ची तो दैट विल बी डेंजरस टू द जनरल पब्लिक. तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने कौन? अग्रीमेंट dangerous for general public. Agreement dangerous for general public. Agreement dangerous for general public. Agreement dangerous for general public. An agreement will be unlawful if dash. Like. Yes, option is D. An agreement will be unlawful if dash. अनलॉफुल से कही void कहनी. अनलॉफुल माने कौन? लॉ केबे एक्सेप्ट करबनी ना जेतळकु द ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन माने कौन? प्रोहिबिटेड, banned, prohibited by law. In a wagering agreement dash. wagering agreement माने कौन? gambling type of agreement रे. one party wins and the other loses. बुझला? gambling रे सब बळे जणे जितिबो जणे हारिबो. illegal thing. Yeah. Which one of the following statements is correct? Illegal agreements are always void. Which one of the following is not a wagering agreement? Contract of insurance. Mark it important. 29 da be important mark karo. A wagering agreement in India is declared by the Contract Act as dash. Contract Act कौन कहूँ? void but not illegal. illegal अली से कहूनी but void कहूची. माने एटा कौन कहया चाहूची? माने जदि एथरे किछि किए का ऊपर केस करि परिबनी. लॉ एति को एनकरेज करनी बट एमति नै कि डिस्करेज हेले करूनी. काहे गेले सेतरे बहुत किछि इनकम होची लोकानर. बुझला ना? बड़ बड़ स्टेज रे बैटिंग चल थाउची. तो दैट्स व्हाई ये जिंसडा इलीगल कहयानी बट कौन कहया? void कहया. Which one of the following is a void agreement? कोड हमर void agreement ना विदाउट कंसिडरेशन void हबो. रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सबुजा कौन हमर void agreement. तापर से पचाचे एन एग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट्स माने कौन? पछु करिक रखिबो, प्रोहिबिट करिबो. या फ्रीडम टू मैरी और मैरी अनदर पर्सन ऑफ हिज चॉइस इज अगेंस्ट पॉलिसी, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इज ऑब्वियसली void. बुझला? तापर एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस अंडर विच एन एम्प्लॉय एग्रीज दैट he will serve a particular employer for a certain duration and he will not serve anybody. तो एटा कौन हमर? हाँ valid. 32 डा कौन? valid. तो से कौन कहूची? agreement of service. agreement of service तो एटा होची कौन हमर? bond paper. bond period sign करियार जहाँ भी कहूचो आमे. bond period sign करियार जहाँ भी कहूचो. तो एथरे कौन होची ना अग्रीमेंट ऑफ सर्विस अंडर विच माने जेतोळ गुटे कंपनी रे ऑलरेडी तो काम करचू तो गुटे बॉन्ड पेपर साइन करू जोथरे को कौन पर्टिकुलर एम्प्लॉयर अंडर रे तो काम करू से पर्टिकुलर ड्यूरेशन रे तो का गोला आ काले सर्व करिवो नो. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट. मार्क इट इंपोर्टेंट. तापर देखो इफ द सेलर एग्रीज टू सप्लाई ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम टू अ सर्टेन बायर एंड टू नोबडी एल्स and the buyer also in turn undertakes to accept the whole of the quantity, the agreement is dash. The agreement is dash. से कहूँ जड़े आगा बायर थी जड़े आगा सेलर थी आउ सी भी एक्सेप्ट कर दो कौन सबुजा क्वांटिटी से नहीं जीव कहीकि. द आंसर विल बी नन ऑफ दी एबव. ये जिनसर ए कॉन्सेप्ट तुम कोर्स रे नाही से गोटे क्वेश्चन हिसाब रे दे देछि तो इग्नोर करो. M who is a dealer in mustard oil only agrees to sell N 500 liters of oil. This agreement is dash. Obviously valid थिबो. हाँ it's a valid contract. काहेंगी एथरे किछि void की voidable हेबा वाला जिनस किछि नाही. तापरे A and B agree that A shall pay ₹1000 for which B shall afterwards deliver to and either rice or smuggled opium. In this case the answer is a question the exam रे आस्थिला.
The answer will be important. So the first one is very good, Chanchal. The first one is valid and the second one is void. Tapare A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. So this is also an exam question. तो से कौन कहूँ 100 टन ऑफ ऑयल बिकी दो कहूँ बुझला ना को ऑयल किसी ठीक ठिकाना नहीं तो एक केस रे कौन हम आमर void for uncertainty जेहेतु को ऑयल किसी ऑब्जेक्ट मैटर टा अनसर्टेन अच्छी सर्टेन नहीं तो दैट्स व्हाई दिस इज void. A agrees to sell B my white horse for rupees 500 or 1000. There is nothing to show which of the two prices was to be given. The answer will be, the answer is void. Obviously uncertainty achi. Void due to uncertainty. Void due to uncertainty. Agreements between a husband and a wife living in a friendly environment are dash. Friendly environment are dash. Domestic arrangements. Mark it important. Husband and wife living in friendly environment are domestic arrangements, not agreements. Domestic arrangements. तापर से कुछ A promised to marry none else than Miss B and in default to pay her a sum of rupees 1000. Subsequently, A married Miss C and Miss B sued for recovery of rupees 1000. This contract is dash. तो से कौन कह देख A promised to marry none else than Miss B. A कहला कि मु Miss B गुआगा बाहा हेबी कौन कहला promise कला खाली and in default to pay her a sum of rupees 1000. जदि किछि भूल हैला जदि ताको बाहा हैलानी तो से कौन 1000 rupees पेमेंट करेबो. Subsequently, A married Miss C. हैला ए कौन कला सी को बाहला तो बी कौन कहूँ तो 1000 टका मागुच से गाड़ी करनी कांदुनी बाड़ोनी ताको 1000 टका मागुच हैला. दिस कंट्रैक्ट इज डैश. दिस कंट्रैक्ट इज void. कौन पे void से खाली प्रॉमिस करछि से किछि भी एग्रीमेंट किंबा कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर हेन बुझला. A promises to pay B से प्रॉमिस कला ना जदि इमती हेले इंदी हबो नाले कोन डिफॉल्ट हेले मु 1000 टका देबी से लेमैन लैंग्वेज रे गुटे प्रॉमिस टा ब्रेक करले से जाई कि केस पकेयो कोच तो सेटा केबे लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हबो कॉन्ट्रैक्ट हेले एनफोर्सेबल हबो. A promises B to pay 100 if it rains on Monday and B promises to pay A 100 if it does not rain on Monday. The agreement is dash. The agreement is एटा कोन गैम्बलिंग हैला ना नहीं तो दिस इज अ wagering agreement. तापर से कोची P engages B to kill C and borrows 100 from D to pay B हैला से मारदो कोची सेडाले उधार रे पैसा आनी मध्य मार दी कोची. If D is aware of the purpose of the loan, the transaction is dash. Mark it important. It must be illegal. Then it is illegal. बुझ पालो? Clear? A leaves a firm doing a particular business in Mumbai. He agrees with the other partners of the firm not to start a similar business as that of the firm in and around Mumbai for 3 years. The agreement is dash. The agreement is? The agreement is कौन? The agreement is? कौन पे void हैला? This is agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade. ताकू गुटे जिनस ट्रेड करिया पे बिजनेस करिया पे जॉब करिया पे मना करा होची तो दिस इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट. ओके. A while filling up the insurance application form states his age as 25 believing it to be true. His actual age was 27. The Life Insurance Corporation issued a policy in his favor charging a lower premium than what it should have charged. If the actual age had been given, this is a case of dash. देखो से गोटे जिनस कहिची believing it to be true. Believing it to be true माने ए निजे जानने कौन ता एज केते तो एटा कौन हेथिबो. The answer is
जदि न जानिगिरी से गोटे जिनस भूल कही दउची, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स मिस रिप्रेजेंटेशन। बुझला ना, जदि जानिगिरी हैला कम पैसा पड़ियो कहिगिरी तार एज 28 हैला, सी जान नथिला कि तार एज 25 वाली से भाभी देछि हैला, को उल्ला हेतियो 25 भाभी देछि। तो जदि जानिनी आ 25 को 25 पके देछि एज टा, तो एडा हैला हमर मिस रिप्रेजेंटेशन। जदि जानिछि जानिकी 28 ले जानिकी जदि 25 पकेछि तो एडा कोन हबा हमर फ्रॉड हबो। बुझला, तापरे 44 टा देखा, B having discovered a vein of ore on the estate of A adopts means to conceal and does conceal the existence of the ore from A. Owing to the A's ignorance, B is enabled to buy the estate at a lower price. The contract is dash. माने ता पाखरे गोटे वैल्यूएबल ओर्स अच्छी आयरन ओर गुड़ाक बाहर से प्लेस रु, बट से जिनसा से ताको लुचेई देछि, लुचेई देला बेलू से कौन गला कम प्राइस रे से एस्टेट टा किनला, तो से केस रे कौन हबो, केस इज voidable at the option of A। केबे ही पारियो ना A जेतलो सत कथाडा जानिबो सेतलो को हबो। तापर से कोची B lets a cabin on hire to be a prostitute knowing that it would be used for immoral purpose। immoral purpose पे यूज हबो कइगिरी मध्य कोन से रेंट रे देला। the agreement is dash, the agreement is void। immoral purpose, very good, immoral purpose पे यूज हबो कहिगिरी कोन से देछि जानिगिरी देछि, तो this is void agreement। A enters into an agreement with B who has robbed A of rupees 10,000 on a drop prosecution against him B in consideration of B's returning 8,000। Afterwards B refused to pay A can get from B dash, A can get from B nothing। कहीं the entire scenario is involved in कौन चोरी तापरे धरा जिबार तापरे चोरी से सब जिनस जेहेतु इनवॉल्व हेगी अच्छी, तो किछि हेले कि हेले काडू पानी पारे। तापर से कोची A agrees with B to discover treasure for magic for a consideration of 500। this is dash, this is a void agreement। काहे कि ना से treasure by magic कली कहूची किछि certainty अछि कि, since there is no certainty, since there is no certainty, okay। तापर से कोची X a tailor employed Y as his assistant under an agreement that Y on termination of his employment shall not start the business of the tailor। so this is dash, this restraint is dash, this restraint is void। कहेंगे restraint in trade। X leaves the firm doing a particular business in Delhi। he agrees with other partners of the firm not to start a similar business as that of the firm। this agreement is dash, this agreement is valid। काहे कि सी कहूची कौन सिमिलर बिजनेस स्टार्ट करे ना ली, सी मना करने की पूरा पूरी तो किछि करूनु कहि, बुझला डिफरेंस टा बुझ से दिल्ली फॉर 2 years पर्टिकुलरली से कहि दोची तो सेम जगह रे किछि ले इंदी सेम बिजनेस स्टार्ट करूनु 2 वर्ष जाय इंदी करी जेहेतु कहि दोची, तो दिस इज नॉट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तापर देखो X promises to supply Y 1 tola of gold brought from the sun। एडा कौन हबो, सूर्य भगवान रो से डायरेक्ट सुना आनी बिकी कहूची, तो दिस इज या वेरी गुड void agreement due to uncertainty। हाँ सेति पे एडा होची uncertain। A promises B not to carry on a similar business as that of B if B pays him certain amount। B pays the money but A continues to carry on the business। B can dash, nothing, B can do nothing। कहेंगे because या चंचल very good। तो कौन कोची से एडा होची agreement in restraint of trade, agreement in restraint of trade broken। से कोची agreement in restraint of trade टा होची कौन हमरो void, माने लॉ किछि हेले हेल्प करियोनी कहूची, आ जदी सेडा भांगिला कहले हेल्प करियोगी सीए करियोनी, तो दैट्स व्हाई कौन से किछि हेले कर पारे। A purchases B's business of selling neckties in Delhi। A can restrain B from dash, A can restrain B from doing the business of selling neckties in Delhi for a limited period। एडा तो सेति कर पारियो आ किछि से कर पारियो।
तापरे A promised to marry B and none else and promised to pay a sum of 5,000 in addition to what he gets from the other party if he marries someone else. A marries C and gets 10,000 from C. B can get from A dash. Nothing. B can get from A. Yeah, very good. The answer is nothing. बुझिल ना concept कौन पैसे किच्छे ले पाई परियोनी. Because this also goes under some thieves that all. Uncertainty जिनसो भितरो जाउच. A promised B to obtain an employment for him in public office. B promised to pay rupees 2,000 to A for this. B gets a job through A but refuses to pay the money. A can dash. Yeah, very good Chanchal. Do nothing. तो बुझिला इमती टाइप ऑफ केसेस जहाँ भी अच्छी हमें गोटे कपल ऑफ केस लॉ हमें डायरेक्टली सॉल्व कलु गोटे 7-8 क्वेश्चंस कंप्लीटली रिपीटेटिव. तो a Hindu already married with a living wife B enters into marriage agreement with a widow of 30 years of age. The agreement is dash. Void because of being forbidden. The agreement is void because of being forbidden by law. Mark it important. से जेहेतु already marriage ये रे थाई गिरी आउ जन के साथ agreement enter करिबो तो this is completely prohibited by law. So it is void. Rajiv entered into a contract with Lata to marry her on a fixed date. However, before the marriage date, Rajiv went mad with reference to the Indian Contract Act, which is the valid response. Contract becomes void. Very good. The contract becomes void. Chanchal, very good. तो कौन पे ना जेहेतु से जाने की किसी करने but unsound mind cannot enter into a contract. That's why the contract will be void. A and B agree to deal in smuggled goods and share the profits. A refuses to give B share of profit. In this case, dash can be done. Illegal. B has no remedy as the contract is illegal. जेते से माने illegal business रे अछंदी जदि पुलिस को कहले फर्स्ट पुलिस आगा को धरि की पळियो आको पैसा कोन दबो सेडा अलग कथा बुझिला. So they will take and they will keep in the custody for yeah, for years, for so many years. no remedy will be available as this is prohibited by law. माने law एडा को जेतो encourage करनी तो we can't take any action against the thing done against it. Fine. तो any doubts in Indian Contract Act जहाँ भी कोई ले concept जदि doubt अच्छी please text, please ask. Economics important question की बात डिस्कशन करते हैं economics के अपन साहब को देखना कल सारी फोन में भी सर ऑलरेडी दे दीजिए मैं एत्रे कोन डाउट अछि बच्चा इतना मैं मैनेजमेंट जो मेथड जो वो देखी थी अपन सेम से क्वेश्चन से मैनेजमेंट रो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कोचो टेक्स्ट बुक और जो मेथड में अपन जो देखी थी इंस्टीट्यूट मेथड है से भी प्राय से भितर मैनेजमेंट किछ चेंजेस किछ नहीं खाली इकोनॉमिक्स और चेंजेस. सो जदि किछि डाउट्स नहीं तो थैंक यू सो मच.